Today we will do the F distribution. We have already done which distribution? The chi-square distribution, T distribution. Now we will come to the F distribution. This is also a sampling distribution. So before coming to the distribution, distribution means to find the PDF of a particular statistic or variate. First of all, we have to define the F variate. What is F variate? If x and y are two independent chi-square variates and with nu1 and nu2 degrees of freedom respectively, then F statistic is defined as F, it is a ratio of the two independent chi-square variates divided by their respective degrees of freedom. एफ स्टेटिस्टिक कैसे बनता है? जब हम काई स्क्वायर वेरिएट को उनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देते हैं, फिर उनकी रेशियो लेते हैं. दिस इज कॉल्ड द एफ वेरिएट. And it follows Snedecor's F distribution with nu1, nu2 degrees of freedom and having the probability function. So they have just written the probability function. In the next article, we will find how to derive the F distribution. So the formula they have given. अब नाम F है तो इसका मतलब X नहीं लिखा हमने, कैपिटल F लिख दिया. So this is nu1 by nu2 raised to power v1 by 2, beta v1 nu1 by 2, nu2 by 2, f raised to power nu1 by 2 minus 1, 1 minus 1 plus nu1 by nu2 into f, nu1 plus nu2 divided by 2, where 0 less than or equal to f is less than infinity, right? So we will, in the next article, we will derive the F distribution. So they have written the remark 1, the sampling distribution of F statistic doesn't involve any population parameters and only depends on the degrees of freedom. अब देखो इसके PDF में, जैसे आप जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF लिखते हैं तो उसमें म्यू भी आता है और सिग्मा भी आता है. That's why they have the two population parameters. इसमें आप देखिए कोई भी पॉपुलेशन पैरामीटर नहीं आ रहा, नाइदर म्यू, नाइदर सिग्मा और एनी अदर. So it implies it is independent of the population parameters. It is only dependent on the degrees of freedom. A statistic F following Snedecor's distribution with nu1 degrees freedom, nu1 nu2 degrees of freedom will be denoted by F. हम इसको कैसे लिखेंगे? F ये follows का sign है, follows F distribution with nu1 nu2 degrees of freedom. If I will say to write F follows F distribution with nu1 nu2 degrees of freedom, so you will not express in the words in the text, you will write as F. इस expression में आप इसको लिखेंगे. Now the main important article, the derivation of Snedecor's F distributions. हमें ये वेरिएबल पड़ा है हमारे पास, दिस वन, ये वाला. मुझे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है. डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए आपके पास x और y टू इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट पड़े हुए हैं. ठीक है, सबसे पहले आप उसका जॉइंट पीडीएफ लिखोगे जो प्रोसीजर होता है. देन यू विल ट्रांसफॉर्म द वेरिएबल्स, right? One you will take f and other you will take y, right? So then you will convert x and y in terms of f and whatever the other variable you will take, right? F and u, here x and y already given, so you will take capital F and capital U. ठीक है, उसके बाद then you will find the Jacobian of transformation. Then you will find the joint PDF of the transformed variables, and the formula will be the joint PDF of the old variables into Jacobian of transformation. So we will proceed accordingly. Since x and y are independent chi-square variates with nu1 and nu2 degrees of freedom respectively, then the joint probability density function is given by, formula आपको पता है, f of xy is equal to, you will put the formula according to the nu1 degrees of freedom, nu2 degrees. हमने दो फॉर्मूले, दो पीडीएफ लिख लिए. फिर हमने जो जो ज्वाइन करना था, e की पावर्स जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी, x की पावर्स नहीं होंगी बिकॉज दे हैव द डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज. उनकी डिग्रीज जो है वो डिफरेंट है, इधर nu1 by 2 है, इधर nu2 by 2 है, and the joint PDF is lying between 0 to infinity. Now the second step is, you can write, this is step number 1 by writing the joint PDF. This is, let us make the following transformation. This you can take as step number 2. Then so f you have taken as it is, whose PDF you want to find, and u is taken as y. Then so that f is lying between 0 to infinity, क्योंकि f जो है आपका
वो बना ही किससे है, काई स्क्वायर वेरिएट से बना है, सो डेफिनेटली एफ इज लाइंग बिटवीन 0 to infinity। और यू किससे बना है, वाई से, और वाई क्या है, काई स्क्वायर वेरिएट है, डेफिनेटली इट इज लाइंग बिटवीन 0 to infinity। सो यू विल कन्वर्ट एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ एफ एंड इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी, u and f, not v, u and f। Now the step number 3, here you will write step number 3, Jacobian of transformation। So you will find the Jacobian of transformation. This comes out to be v1 v1 u1 into u divided by v2। Now this is the step number 1 2 3, and this is the step number 4। Now the joint PDF of the transformed variables। So here the name is GFU। This is, first of all, here you will write, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये ऊपर जो लिखा हुआ है f of xy into mod of j, f of xy into mod of j। So you will put the value, ये जो पूरी f of xy की वैल्यू है वो आप यहाँ पे नीचे पुट करेंगे, लेकिन पुट करने से पहले you will put the value of x as nu1 by nu2 into fu, and you will put the value of y as pu, right? So देखो ये इन्होंने सारी वैल्यूज पुट कर दी। Now after putting all the values, so what you will get, अब देखो nu1 by nu2, आपके पास nu1 by nu2 raised to power nu1 by 2, ठीक है। ये देखो यहाँ से, ये देखो nu1 by nu2, ये जो फर्स्ट स्टेप आपने लिखा है, मेरा कर्सर जो है आपके सामने है, दिस इज nu1 by nu2 raised to power v1 by 2, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये 2 raised to power, ये सारा कांस्टेंट है, टा 1 by 2 टा nu1 by 2 टा v2 by 2, ये हो गया। e के अंदर है माइनस u by 2 1 प्लस v1 by v2 या nu1 by nu2 into f। अब इधर से हम f और u की वैल्यूज अलग करेंगे। दिस इज f रेज टू पावर v1, देखो f आपके पास u की पावर आ रही है, तो v1 by v2, इधर से v2 by v1 by v2, इधर v2 by 2, राइट। और साथ में दोनों के साथ एक -1 है, ठीक है। और एक आपके पास जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का u भी आना है, तो उससे क्या होगा, आपका एक माइनस कवर अप हो जाएगा। अब f की पावर देखिए, f की पावर बचती है v1 by v2 -1, ठीक है। और इधर आपका जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में v1 by v2 भी है, ठीक है, ये वाला v1 by v2, यानी आपको दो v1 by v2 मिल जाएंगे, उसमें से एक पावर -1 इसके साथ खत्म हो जाएगी। सो व्हेन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, द वैल्यू ऑफ v1 by v2 एक माइनस में हो गई, एक +1 में हो गई, वो कैंसिल आउट हो जाएगी। यू आर ओनली लेफ्ट विद v1 by v2 रेज टू पावर v1 by 2, ठीक है जी। सो द वैल्यूज ऑफ f लाइंग बिटवीन 0 to infinity and value of u also lying between 0 to infinity, ठीक है जी। Then now whose PDF you want to find? You want to find the PDF of f. It means we will integrate the joint with respect to u to get the value of f. So हम integrating with respect to u over the range 0 to infinity, we will get the PDF of f. So this is g1f, ये constant सारा as it is, जो independent of, जिसमें f नहीं है बेटा, ठीक है, जिसमें सॉरी आप u के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, तो f वाला सारा जो है और जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। अंदर जो है 0 to infinity e raised to power minus u by 2 1 plus v by 2 into f into u raised to power v1 plus v2 divided by 2 minus 1। तो ये एक स्टैंडर्ड आपके पास फंक्शन है, इंटेग्रल है, जिसको हम गामा की वैल्यू इसमें से, गामा इंटेग्रल की वैल्यू इसमें से डिराइव करेंगे। अब आप देखिए ये वाला सारा पोर्शन है एज इट इज लेफ्ट पे जो पड़ा हुआ है, राइट। अब इसमें आप इसको कैसे लिखेंगे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज टा इनटू v1 plus v2 divided by 2 into 1 by 2 1 plus v1 by v2 f whole raised to power, यही जो u की पावर है वो नीचे आ जाएगी v1 plus v2 by 2। So this is, you can write directly, you can also solve it, but we can use it directly as a value of the gamma integral, right? So what you will get, this is v1 by v2 raised to power v1 by 2। और अब आप इसमें क्या करेंगे, ये अब जितने जो ये जो टाज हैं, टा m plus n इन टा m plus n by 2 into टा m by 2 into टा n by 2, ये बन जाएगा आपके पास बीटा mn। So you have written बीटा v1 by 2 v2 by और nu2। So f raised to power v1 by 2 और nu1 by 2 -1 और 1 plus v1 by v2 f, और 2 जो है बेटा आपका कहीं ना कहीं ये वाला जो 1 by 2 2 raised to power v1 plus v2 by 2, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो पड़ा हुआ है ऊपर, ठीक है जी। सो यू आर ओनली लेफ्ट विद
दिस, जिसमें एक बीटा आ रहा है, एक v1 by v2 आ रहा है, एक f आ रहा और एक फंक्शन v1 by nu1 by nu2 और f का इकट्ठा आ रहा है. So this is a required probability function of f distribution with nu1 and nu2 degrees of freedom. So this is the first article that how to derive the f distribution from the f statistic. So there is another way, a little way. This, if you want to read, you can. Now I'm directly coming to the constants of F distribution. Constant means movement about the region, mean, variance. So coefficient of skewness, cortices, mean, median, mod. ये सब चीजें हमने find out करनी है. Now, what is mu r dash? This is movement about a region. So here the name of the function is f, capital F. Name of the variable is f not x. So you will take expectation of f r. This is f raised to power r into PDF of f. वो हमने सारा लिख दिया. So जो constant है independent of f है वो सारा बाहर आ जाएगा. With जहाँ पे capital F आ रहा है you will write like that. Now to evaluate the integral, you will put v1 by v2 into f is equal to y. Then you will get the derivative. Then you will have this value. ठीक है जी. So you will put the value here. So you will put, देखो f की जगह आपने क्या पुट कर दिया, आपने f की जगह पुट किया, f की वैल्यू क्या आई फिर, what is the value of f? If v1 by v2 f is equal to y, what is the value of f? f is equal to v2 by v1 into y. वो देखो आपने ऊपर पुट कर दिया. ठीक है, नीचे आ गया 1 plus y v1 plus v2 divided by 2. ठीक है जी. और साथ में पावर आपकी एडजस्ट हो जाएगी क्योंकि f देखो ऊपर f कॉमन ही है, r प्लस v1 by v2 माइनस 1, ये सारी पावर ऊपर आ जाएगी और साथ में ये डेरिवेटिव आपने लिख दिया. ठीक है, अब डेरिवेटिव को फिर एडजस्ट कर लेंगे. सो यू आर लेफ्ट विद हियर, यहाँ से देखो v2 by v1 है और यहाँ से आप v2 by v1 रेज टू पावर r यहाँ चला गया आपका और इधर रह गया y रेज टू पावर r प्लस v1 by 2 माइनस 1. ठीक है जी. और देन बीटा v1 by 2 v2 as it is 1 plus y and here is v1 by 2 plus, so you will check here, this is y की ऊपर आ गई वैल्यू, इधर 1 plus y v1 by 2 प्लस आर. अच्छा, इसमें एक प्लस आर किया और एक माइनस आर किया, ये आपका एडजस्ट हो जाएगा v2 को, किसमें एक पावर -1 है, इसमें +1 है. ठीक है, तो हमने प्लस आर माइनस आर इंट्रोड्यूस करके अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड बीटा, ये हमारे पास एक बीटा फंक्शन की वैल्यू बनती है. बीटा जो होते हैं गामा इंटेग्रल वैसे बीटा इंटेग्रल्स होते हैं. सो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है. अब आप उसमें देखिए जो पैरामीटर्स आ रहे हैं वो एक आ रहा है r प्लस v1 बाय 2 एंड v2 बाय 2 माइनस आर, और जो पहले वाला है वो ऊपर की पावर दैट देखो लिखने में कैसे आएगा ना, ये y रेज टू पावर m माइनस 1, अगर मैं इसको m लेती हूँ, r प्लस v1 बाय 2 को अगर मैं m लेती हूँ तो ये आया y रेज टू पावर m माइनस 1, नीचे आया 1 प्लस y रेज टू पावर m प्लस, और ये n है आपका. ठीक है जी. सो विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशन दैट v1 by v2 माइनस r, दैट इज v2 इज ग्रेटर देन 2r. ये इस कंडीशन क्योंकि गामा इंटेग्रल या आपने अगर बीटा गामा इंटेग्रल को सॉल्व करना है तो उनकी एग्जिस्टेंस कंडीशंस भी होती हैं, तो ये तभी आपका इंटेग्रल सॉल्व होगा विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशन दैट v2 मस्ट बी ग्रेटर देन 2r, राइट. So this is a little part, there is no need to use this. So we have solved the mu r dash, हमने movements about a region जो है वो find out कर लिए हैं. So this becomes mu r dash. अब हम ये दोनों बीटास को बेटा solve करेंगे, right? So you will put r is equal to 1. When you will put r is equal to 1, this becomes nu2 by nu1. So beta ये as it is आएगा. अब यहाँ पे भी आप r की वैल्यू पुट करेंगे. This is 1 plus nu1 by 2, nu2 by 2 minus 1. ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा nu2 is greater than 2 आ जाएगा. ठीक है जी. चलिए, so when you will put the value and you will solve this ta, right? You know what is how to solve the ta n is n minus 1 into ta n minus 1. So you will, when you will solve the ta, what you will get here, v2 upon nu2 upon nu2 minus 1. अब डिनोमिनेटर में nu2 minus 2 है, इसका मतलब nu2 minus 2 जो है वो greater than 0 आना चाहिए. It means nu2 is greater than 2.
ये देखो फॉर्मूला नीचे लिखा है टा आर इज इक्वल टू आर माइनस वन इंटू टा आर माइनस वन. So when you will put r value of r, when you will solve, you will get this, right? Then mu2 dash में आप दो वैल्यूज के लिए करेंगे, so यहाँ पे स्क्वायर आ गया, then you will again solve it, right? So this becomes ये वैल्यू आपकी बन जाती है. Then what is mu2? Mu2 is mu2 dash minus mu1 dash square. So you will subtract both the values, and what you will get this variance. So mean of the distribution. What is the mean of this distribution? Is mu2 by mu2 minus 2, right? And what is the variance of the distribution? This is a very big term, and with respect to the condition that mu2 is greater than 4. So underline these two expression as a mean and variance. Similarly, on putting the value r is equal to 3, mu you will get mu r dash, mu3 dash, and mu r dash. Then you can find the central moments mu3 and mu4, right? It has been proved. चलो ये हम बाद में करेंगे. Now next is the mod and points of inflection. Mod means highest point पे हमें किस x एक्सिस के किस पॉइंट पे हमें हाईएस्ट वैल्यू ऑफ y मिलती है. दैट इज y मतलब यहाँ पे f मिलता है. हमारा कर्व जो है वो किस पॉइंट पे हम पुट करें भी हाईएस्ट पीक हमें मिले, तो फ्रीक्वेंसी जहाँ पे मैक्सिमम हो, दैट इज अ पॉइंट, दैट इज अ मॉड. सो मॉड के लिए सबसे पहले, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है आपका पीडीएफ, व्हाट वाज द पीडीएफ, here's the pdf, this one. So ये उनकी पावर्स में है. सबसे पहले पावर्स को नीचे लाने के लिए we will take the log. So first of all, for finding the mod of the distribution, the first line what you will get, you will write the PDF of F distribution is given by this, then taking log on both sides. So after taking log, जो constant है उस सारे को हमने C लिख दिया, ठीक है. पावर्स सारी पावर्स नीचे आ जाएगी, जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस होके ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी. So where C is a constant independent of F. Now you will take the partial derivative with respect to F, and then you will put the value is equal to 0. So when you will put the value is equal to 0, what you will get F is equal to this. Now this is the highest value, maximum value or not. It means you are maximizing the function, और function को maximize करने के लिए you have to take the second derivative. If the second derivative is less than 0 at this point, it implies that this is the mod of the distribution. So mod of the distribution is nu2 into nu1 minus 2 divided by nu1 into nu2 plus. This is the mod. So then, since f is greater than 0, mod exists if and only if nu1 is greater than 2. देखो अगर मान लो आपकी वैल्यू जो है nu1 की, ये जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, अगर आप यहाँ पे 2 ले लेते तो मॉड तो 0 हो गया, ठीक है. मॉड 0 हो गया, इट मीन्स वो जो है वो अपसर्ड वैल्यू दे रहा है, ठीक है. तो इट मीन्स इसकी एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है कि v1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है एफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 से शुरू हो रही है. तो कोई भी एफ एक्सिस पे वैल्यू जो है आपकी 0 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है. So therefore the mod. अब यहाँ पे mod को इसको कैसे एक्सप्रेस कर दिया, देखो एक लिखा है v2 by v2 plus 2 और एक लिखा है v1 minus 2 upon v1. So hence mod of the distribution is less than unity. So now the question is how it is less than a unity. So I am writing on the screen how the mod of the distribution that you have written v2 upon v2 plus 2 या nu2 whatever it is into, आप n1 n2 भी लिख सकते हैं बेटा. there is no need to write v1 and v2, n1 n2 भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं. So मैं स्क्रीन पे बताती हूँ आपको. So what mod is equal to, we have written mod of F distribution. So this is equal to nu2 upon nu2 plus 2 into nu1 minus 2 upon nu1, right? अब वैल्यू जो है हमें क्या प्रूव करनी है, द मॉड इज इट्स ग्रेटर देन यूनिटी और लेस देन यूनिटी.
हाँ जी, प्लीज रिपीट. It is greater than unity or less than unity? Less than. It is less than unity. So आप इसमें क्या चेंज करेंगे so that your value is less? और आपके पास कंडीशन क्या है? v1 minus 2. It is v1 minus 2 is greater than 0. That is v1 is greater than 2. So how you will prove it? The value is less than 1. Less than union is total आप जो भी whatever the value of degrees of freedom you are putting, the value of the distribution must be less than 1. So this is nu2 by v2 plus 2, right? And this is v1 by v1 minus 2 by v1. You can write like that. This is 1 minus 2 by v1, right? अब दूसरी बात देखिए, अब व्यू जो v2 है वो किससे छोटा है? v2 plus 2 से छोटा है, ठीक है? तो v2 by v2 plus 2 या nu2 it is less than 1. Is it clear? तो ये भी क्वांटिटी क्या आ गई? लेस देन 1. और ये भी क्या है? 1 में से कुछ पॉजिटिव टर्म लेस देन हो रही है, लेस देन 1. इसका मतलब द टोटल क्वांटिटी इज लेस देन 1. So therefore the mod of F distribution is less than 1. Right? ठीक है जी, आई बात समझ में? क्लियर? So hence mod of F distribution is always less than infinity. I am just, beta you will just write the, note the point. The points of inflection of F distribution exist for nu 1 is equal to 4. Mod exist कर रहा है greater than 2 के लिए. Points of inflection exist कर रहे हैं greater than 4 के लिए. I am just coming to its answer. I'm leaving the proof. I'm just coming to its answer. So the points of inflection, the sum of points of inflection of the distribution is 2 times. This is just wait. So they have written the sum of points of inflection of this distribution, nu1 by nu2 into F distribution is 2 into v1 by 2, v1 minus 2 upon v2 plus 2. So the sum of the points of inflection of F distribution is v2 by v1 into 2 times v1 by, क्योंकि देखो पहले इसका लगाया ना, अब हमने F का लगाने के लिए तो इसको v2 into v2 by v1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी? Provided v1 by v2 is greater than 2, which is equal to 2 times, this is equal to 2 times v2 into v1 minus 2 divided by v1 into v2 plus 2. This is equal to 2 times of mod, provided v1 is greater than 4. It means the points of inflection of F distribution, if they exist, are equidistant from mod. So I have just not read the article regarding this. I have just taken the result that the points of inflection, they are equidistant from mod and they exist for nu 1 is greater than 4. So how to find the points of inflection? Beta, you have to take the third derivative. पीछे आपने first derivative निकाला, second derivative mod के लिए, फिर third derivative जब आप zero put करते हैं बेटा, वहां से आपका point of inflection जो है वो check होता है, ठीक है? So now next is Carl Pearson's coefficient of skewness. The formula is mean minus mod divided by sigma. So since mean is greater than 1 and mod is less than 1, so therefore F distribution is highly positively skewed. So what was the mean of the distribution? The mean of the distribution is mu1 dash is equal to v2 by v2 minus 2. ये है mean. अब इसको डिराइव करेंगे, ये कैसे जो है क्वांटिटी जो आपके पास आ रही है कार्ल पियर्सन जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो ग्रेटर देन 0 क्यों है, ठीक है? और क्यों है? क्योंकि मीन वाई मीन इज ग्रेटर देन व्हेन मॉड वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट इट इज लेस देन 1. सो मैं so I'm going to share with you
Yes. So what is the mean? Mean of the distribution. So mean of distribution is this is V2 upon V2 minus 2. This is equal. So introduce minus 2 and plus 2. Right? This is equal to 1 plus 2 upon V2 minus 2. 1 में कुछ ऐड हो रहा है पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशन क्या है V2 तो पहले ही 2 से बड़ा है इट इंप्लाइज द होल क्वांटिटी इज ग्रेटर देन therefore mean of F distribution is greater than 1 and mod of F distribution is less than 1. Therefore SK क्या लिखा मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय सिग्मा. सो मीन जो है वो एक से बड़ा है, एक से बड़ा हो गया. सपोज करो मैंने कितना ले लिया, मैंने 1.5 लिया, ठीक है. मॉड जो है वो एक से कम है, मैंने कितना ले लिया 0.5. सिग्मा हमेशा पॉजिटिव होता है तो होल क्वांटिटी जो है वो कितनी हो गई ग्रेटर देन 0. देयरफॉर देयर इज देखो स्क्यूनेस ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज अ हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. It is highly skewed distribution. ठीक है. So thus F distribution is highly positively skewed. The probability F increases steadily at first until it reaches its peak corresponding to the model value, which is less than 1, and then decreases slowly so as to become tangential at f is equal to infinity. That is, f-axis is an asymptote to the right tail. So what does it mean? That is the how you will make the curve of f distribution. So write the probability curve of f distribution. हमें डोमेन बता दी क्या है 0 से लेके इंफिनिटी, क्योंकि पॉजिटिवली, और दूसरा बता दिया ये पॉजिटिवली स्क्यूड है और इसका जो मॉड है किससे कम है लेस देन 1. ठीक है जी. तो इसका मतलब वो कह रहे हैं पहले ये पीक पे पहुंचेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे अटेन कर ली इसने, फिर ये धीरे धीरे नीचे जाता जाएगा और so that it is asymptote to the f-axis like this, right? So, अगर आपने बिल्कुल फ्री हैंड ड्रॉ करना है then this will become, ये इस तरह से बनता है ये f डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व. So you will write here 0 to infinity, ये f-axis है, ये है f of capital F, right? और ये टेंजेंशियल है, ये जो कर्व है ये टेंजेंट बन जाता है f-axis, right? Clear? And this is highly positively skewed distribution curve. ठीक है. Clear? So this is a curve of probability curve of F distribution. So I hope the point is clear to all of you.